what we actually got in 1909. उसको एक दफा जरा देखना जरूरी है. Governor General or Viceroy was the ruler of India. Governor General used to rule India through Executive Council and Imperial Legislative Council. Executive Council में 5 members and all were British. Imperial Legislative Council में these 5 will automatically become members of Imperial Legislative Council. Plus, there were 16 to 20 additional members. And out of those 16 to 20, 6 to 8 were Indians and 10 to 12 were officials. What Muslim League demanded, Muslims demanded in Shimla deputation. They demanded 50%. 33% seats for Muslims in Imperial Legislative Council. सही है जी? Plus, they demanded Muslim seats in Executive Council. The main points. Plus, they demanded separate electorates. Main demands. हाँ, इसके अलावा छोटी और भी demands हैं, लेकिन main demands. So what they got in 1909? वही Governor General, Viceroy, 1909 के एक्ट के मुताबिक Executive Council, 5 British, हाँ जी 5 British, plus 1 Indian for the first time was included. And दूसरी तरफ Imperial Legislative Council. Previously बड़ा complex structure, वो 5 आ जाएंगे, additional members, तो ये वो. Now the seats were fixed at 60. Out of those 60, 27 Indian seats and 33 officials. And out of 27, 21 general seats and 6 seats fixed for Muslims for the first time in India. Meaning, separate electorates were also granted to Muslims in 1909. So, यहाँ तक का framework हमने इस पे बात की थी. And up till 1909, if we contextualize the Indian politics, so up till 1909, of course, overall India में Muslim population was 25%. There was no province whereby Muslims were in majority, but in 1905, when East Bengal was established as a province, so it was the only province where Muslims were more than 70%. So in 1909, Muslims in India, they had 2 things. 1, separate electorates, and 2nd, East Bengal. Because in the rest of the provinces, Muslims were not in majority. This was the only province whereby Muslims were in heavy majority. And what happened in 1911, that out of nowhere, this East Bengal province, yani ke partition of Bengal, was cancelled. Annulment of partition of Bengal. ये मनसूख हो गया because of the pressure carried out by Congress.
और जब ये बंगाल सूबा खत्म हो गया, ओनली प्रोविंस वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी, तो देन मुस्लिम लीडरशिप को फिर एक कंसर्न डेवलप हुआ दैट द ओनली थिंग दे आर लेफ्ट विद इन 1911 नाउ इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बस। एंड इफ कांग्रेस उसने और ज्यादा प्रोटेस्ट किया तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी खत्म हो सकता। सो इस कॉन्टेक्स्ट में मुस्लिम लीडरशिप had to decide smartly, strategically, what is going on, particularly since 1858 till 1911. In this whole phase, Muslim leadership, either in the form of Sir Sayyid, Agha Khan, and others, they were trying to remain loyal with British. They believe that Congress is a threat for Muslims, and they believe that only possible way to protect Muslim rights in India is by joining hands with British. So that's why Sir Sayyid also education हासिल करो, loyalty towards British रखो, सही जी। That's why All India Muslim League इसके ऑब्जेक्टिव में भी ब्रिटिश के सपोर्ट के पॉइंट्स मौजूद हैं। That's why के अजीज भी अपनी किताब में लिखता है कि जनाब आगा खान, he wrote to Muslim leadership कि भाई हमें ब्रिटिश के साथ रहना चाहिए, ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहिए इन इंडिया। But this strategy in 1911, this strategy failed. क्यों? Because हमारा सूबा ईस्ट बंगाल, despite the fact that we showed our loyalty towards British, despite the fact that we opted for a legal constitutional platform, despite the fact we didn't involve in any protest in this whole phase, but still we lost our province only because Congress protested. So 1911 was the year, or you can say from 1911 to 1912 was the year in which All India Muslim League, yani कि Muslim leadership, All India Muslim League, one can witness a shift in its political choices. And the most important choice was to join hand with Congress. And for that purpose, efforts of unity were started. And the first step towards the efforts towards this unity is known as 1913, when Jinnah joined All India Muslim League. That was the very first step. Make sure that Jinnah joined politics in 1906, and from 1906 till 1920, Jinnah was member of Congress. Make sure Jinnah joined Muslim League in 1913, and Jinnah remained in Muslim League, yani All India Muslim League, and then it became Pakistan Muslim League till his death, 1948. Make sure Jinnah also joined a third party, 1916, for which he remained member till 1920. Home Rule League.
So basically from 1916 till 1920, Jinnah was member of 3 parties in India. And it was very normal at that time. Today, we believe that it's a party defection and a politician must remain in a single party. But Jinnah, at that time, it was culture, it was a tradition. There was nothing wrong at that time. That politicians, they were members of different parties. Jinnah was member of 3 parties from 1916 till 20. So nothing strange in this context. Nevertheless, Jinnah joined Muslim League with a purpose. And the only purpose of Jinnah was unity at that time. Unity between Congress and All India Muslim League. That was the purpose. And that unity seems to be nearly impossible. It was not possible. But Jinnah, the way he played his role from 1913 till 1915 made it look so easy. What he did, his first step was change in All India Muslim League constitution. Jinnah believed that Congress, the manifesto or the agenda of Congress is self-rule, that we, the Indians, must rule India. So, All India Muslim League, its objective is quite antithetical to Congress objective. All India Muslim League's objective was to promote sense of loyalty among Muslims towards British. So Jinnah insisted to change it. Because if you would not change it, Congress will never join hands with Muslim League. So this objective was changed in 1913. And it was changed with the idea of responsible governments, that All India Muslim League also want responsible governments in India. So now this idea of self-rule and responsible governments, if not equivalent, they are symmetrical to each other. So the very first step which was taken by Jinnah was change in the constitution of All India Muslim League, so that then we are, a point to start negotiation with Congress. After that, the second step, which was planned by Jinnah, is known as Memorandum of 1915. As you know, that since 1909, Imperial Legislative Council, there were 27 elected Indians. Out of those 27 elected Indians, we know it that 6 were Muslims. In 1915, 19 out of 27 elected Indians, they adopted a memorandum in assembly known as Memorandum of 19. Through that memorandum, these 19 members, they demanded
reforms from British. And all these 19s out of 27 were either only members of Congress plus All India Muslim League. So that was the second step, that the two major parties of India in assembly, they collectively put forward their demands to the British, that what they want in India. So that was the second step. But the British paid no attention because British were busy in World War I, as you know it. So British found no time, and they didn't find it, a conducive time to debate over the future reforms in India when they are engaged in World War I. It's 1915. So British paid no attention towards this memorandum of 19. Third initiative which Jinnah took was 2 sessions, 1 city. In 1915, both the Congress and All India Muslim League, their sessions, annual sessions, were held in the same city, in separate places. City named Bombay. Within a same city, on separate places, both the leadership, they conducted their annual session separately, independently, separate. But they interacted with each other. From their individual sessions, they endorsed Memorandum of 19, both the parties. So in this way, through these 3 steps, he created that environment whereby when the 4th step came up, it was not a surprise. That was Lucknow session, which was a combined session. Combined session, first and the last session, combined session. Both the parties in 1916, they held a combined session in Lucknow. And in Lucknow, whatever happened was basically practiced earlier in Bombay, in Memorandum of 19. So there was nothing new. Lucknow was a symbol. All the things which were signed, which was delivered in Lucknow session, were practiced previously. So it was a symbolic sign. It was a sign of unity. Although unity was very much there even before 1916. From 1915 to 1916, unity was very much there. But it was a symbolic sign that today we are conducting our combined session. It means we are together now. So that combined session, whatever was agreed between Congress and All India Muslim League in that combined session, is popularly known as Lucknow Pact. So one thing is very much sure, that this Lucknow Pact would not be constituted merely by some points of unity only. No. Both the parties would definitely would demand something from British as well. So basically,
what we consider Lucknow Pact as a unity is just a small part of Lucknow Pact. The broader canvas is that not only they united, but they unitedly, they asked for demands, reforms in India. From whom? British. So now we have to analyze the demands, what they asked from British, as well as few points of unity. This whole package is known as, you can say, salient features of Lucknow Pact. So now let us start these features. And again, in order to understand these features, we have to make this chart again. What British introduced in 1892, their Councils Act. Then what they introduced in 1909 Act. What was demanded in 1916 Lucknow Pact, and what actually British granted in 1919 Act. Of course, we knew that these 5 would become member here, plus 16 members. Out of those additional members, 10 to 12 officials and 6 to 8 Indians. 1909, 5 British plus 1 Indian. Imperial Legislative Council, 60. 27 Indians. 33 officials. Out of those 27, 21 general seats, 6 Muslims. So what they demanded in Lucknow Pact? Governor General, Viceroy. Executive Council, Imperial Legislative Council. They demanded 50% Indians here. That minimum 50% Indian representation must be there in Executive Council of India. Before going into the further demands and their details, it is mandatory to analyze the impact of this demand in the next forthcoming reforms as well, so that it will become easy to understand each and every reform demand.
Of course, in 1919, Governor General or Viceroy, the same person. One, same Executive Council. So how would British respond to this demand? Because Lucknow Pact is not an official document. It's a demand package. It's a unity package between two parties. It was not an official document. सरकारी नहीं है, ये सरकारी है, ये सरकारी अंग्रेज की तरफ से, ये सरकारी, ये तो दो पार्टीज के दरमियान का उनकी डिमांड है. सो इस डिमांड पे ब्रिटिश ने कैसे रिस्पॉन्ड की? When in 1919 British introduced reforms, 5 British members were there as previous practice, but Indian seats were increased from 1 to 3. So it means that British took pressure of Lucknow Pact. They increased Indian seats. Although it was not 50%, there were not 5 Indians, but still something is better than nothing. So the very first demand, one can easily conclude that if you would able to understand Lucknow Pact, you would nearly understand more than half of the freedom movement. Because when you try to elaborate this point of Executive Council, that the Executive Council was the Supreme Council of India, and previously there was no Indian, then only one Indian, and when both the parties applied pressure on British, they were forced to increase Indian seats from 1 to 3. So when you will write it as the significance or importance or the impact of Lucknow Pact, so when you will write this, it will automatically become a one long paragraph. But this, in this style, you can easily understand it. You can easily absorb it, and you will never forget it. Second thing, of course, Imperial Legislative Council. Lucknow Pact demanded 150 seats. Previously, there were only 60 seats. They demanded 150 seats. And out of these 150, they demanded that only 30 seats must be fixed for officials and 120 seats for Indians. Previously, there were only 27 seats for Indians. Now they demanded 120 seats for Indians. This 120 is basically 80%. It's 80% of the total seats. 120 is 80% of 150. So previously there were only 27. So they were demanding more Indian seats and less British officials. And out of these 120, because it was a unity pact as well between Indian National Congress and British and Congress, Indian National Congress and Muslim League, sorry. So there must be a unity point as well. Out of these 120, both the parties agreed that 40 seats will be given to Muslims. So previously, there were only 6 seats for Muslims. And if it is accepted by the British, 40 seats will be granted to Muslims. Now, how British responded to it? British responded it by redesigning this legislative house. They labeled it as Central Legislature, Markazi Kanun Saz Assembly.
central legislature. So in this central legislature, there will be two houses. One house is known as Indian Legislative Assembly. They also changed the name, Indian Legislative Assembly. And the other house was Senate. Senate of India. In few books, you would come across this name as Council of State. It's the same thing. In few books, you would come across the name Senate, and in few books, you would come across the name Council of State. Simple. In this Imperial Legislative Council, 145 seats were allowed. So you demanded 150 and British granted 145. Out of this 145, 103 seats were fixed for Indians. You demanded 120. They granted 103. Still, it's a lot of seats, because if you would compare it with the previous act, only 27 Indians. Now 103 officially announced, and remaining 42 officials. Out of these 103, how many seats were there for Muslims? 30 seats were reserved for Muslims by the British, and 73 general seats. So this second point was quite in favor of Muslims of India, because previously there were only 6 seats for Muslims, and now they will get 30 seats. In addition to this, British also granted seats in the Senate of India. The total seats were fixed at 60. It is something new in India, popularly known as bicameral legislature. ठीक है जी। ओए अंग्रेजी कोई ज्यादा तो नहीं हो रही, मौत तो नहीं पड़ी हुई। अच्छा भाई, किसी ना किसी को ना अपनी अम्मी बाजी एक जरूर करानी होती है किसी ना किसी लेक्चर में। डायरकी आ जाती है, डायरकी तू मैं रिश्तेदारी करनी डायरकी ना, सबर कर। और बेचारे पहले अंग्रेजी सुने, फिर नोट करें, फिर अंग्रेजी का तर्जमा करें दिमाग में, फिर उसके बाद समझें, वो इतनी देर में बात आगे चली जाती है। सर 73 जनरल सीट्स की समझ नहीं आई। नहीं आई बेटा तो इग्नोर कर दे, इसका मतलब है तूने आखिरी क्लास को नहीं दी हुई जिसमें पूरा सेपरेट इलेक्टोरेट समझाया था, तो इग्नोर कर दे, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। एक ही दफा समझाता हूँ मैं, बार बार नहीं समझाता।
So out of those 60 seats, 34 seats were reserved for Indians, and remaining seats, 26 seats, were fixed for, again, officials. And out of these 34 Indians, 11 seats were also fixed for Muslims in this Senate. So Muslims gained in combined 41 seats in central legislature. So that was a great sign for Muslims, especially. So up till now, we discussed only 2 points of Lucknow Pact. One related to Executive Council. Second related to Imperial Legislative Council. The way British announced a new model of bicameral 2 assemblies. Why British announced 2 assemblies? Because the British narrative was that it's the promotion of democracy. And true, very true. In any country, if it's a democracy, you would come across bicameral legislature. A true democracy, you would definitely come across bicameral legislature in any true democracy. Even a democracy like Pakistan, you would come across bicameral legislature. Bicameral legislature, whereby there are 2 houses, is considered as that in that country, democracy is present. Now it's healthy or weak, whatsoever, but democracy is present. So British narrative was that we are trying to promote democracy in India. सही जी? सर बहुत मुश्किल अंग्रेजी बोलते हैं। तूने भी मुश्किल अंग्रेजी सुनी कब है? आसान जी अंग्रेजी बोल रहे हैं। उधर से मेरे सामने किताब खुली है सईद अकबर साहब, तो वो जिस तरह किताब में अब अंग्रेजी चल रही है तो मैं इस तरह बोलना ना, मैं आपसे तो अंग्रेजी बोलने वालों में से नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ अंग्रेजी? तो वो किताब खुली हुई सामने, उसमें जो लिखा भाई वो बोल रहा हूँ। बुक सर, हाँ जी बुक, बाकी बाजी सर, ये किसी लड़के ने अगर किया होता ना एक कमेंट तो मैं उसको बुक का नाम भी बताता, लेकिन अब आप लड़की ने रिप्लाई किया तो इसलिए मैं बुक का नाम नहीं बता सकता। जेंडर, इसको डिस्क्रिमिनेशन समझने मेरी तरफ से, ठीक है? लो जी, सो देखते हैं जी फिर। बट द रियलिटी वाज दैट ब्रिटिश न्यू दिस थिंग कि भाई ये जितनी सीटें मांग रहे हैं ना जी इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इफ वी विल ग्रांट देम, सो ऑल बिल्स, लॉज, उनको तो इंडियंस डोमिनेट कर जाएंगे। एंड इफ दे विल नॉट ग्रांट सीट्स तो जनाब देयर इज अ यूनिटी बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, तो प्रॉब्लम बनेगी, हमारे लिए प्रोटेस्ट होगी। So this house which they created, this house which they created, this one, it was a very weak house, very weak assembly. Sahij, if this house where Indians are in majority, even if they would object any British law, if they would vote against any British law, if then the matter will be sent to Senate. And even in Senate, which is much
stronger house, stronger assembly, upper house. Even if this house would reject the bill, then they have granted veto power to Governor General of India. That whatever Indians would do in these assemblies, it will not matter unless and until Governor General has the veto power. So if Indians wanted to change this veto power, then this Senate would come up with 2/3 representation, which was not possible for Indians. So in a way, they promoted democracy, but they also extended their power as well. Nevertheless, Indian representation and Muslim representation increased in houses. ठीक है जी? Which was a very good sign, because previously there were only 27 elected Indians, seats 6 Muslims, and now in combined there are 137 Indians, 34 either, 103 either. And out of those 137, 41 were Indian. Most of the seats were general seats. So Indian and Muslim representation increased. So up till now, we have only discussed 2 points related to Lucknow Pact, but both points, through these both points, we have basically covered nearly 30 years of freedom movement from 1892 till 1919. That whatever has been happening in the past, if we have no understanding of that, we cannot understand whatever happened in the future. And this nucleus is Lucknow Pact. Whatever happened previously, whatever happened afterwards, because of the demands of Lucknow Pact. So if you are able to understand Lucknow Pact, then it means you are at home and you are quite capable to analyze 30 years of freedom movement easily. Now, in addition to these points, there were other points as well in Lucknow Pact. For instance, the next point pertaining to Lucknow Pact was a very interesting point. It was related to appointment of governors in provinces. Lucknow Pact demanded that governors will be appointed with the consent of Imperial Legislative Council. Which council? This council which they demanded, in which Indians are in majority. So they would appoint Indian governors if British would accept it. And of course, in 1919, they changed the name of Imperial Legislative Council to Indian Legislative Assembly. But still in Indian Legislative Assembly, they granted 145 seats. Out of those 145, 103 Indians. ऐसे ही. So, appointment of governors in provinces. Is it a demand? हाँ तो होर क्या है, ये डिमांड ही है. पता नहीं कहाँ से. और मैंने क्या करना, मैंने अंग्रेजों को रिश्ता देना, मैंने अपना डिमांड ही करा रहा हूं ना.
तो भाई खुदा की कसम, कैसे कैसे जाहिल जो है ना वो आ जाते हैं सीएसएस कर। इस पॉइंट में कहां से लगता है कि ये डिमांड नहीं है, ये मैं कुछ और करा रहा हूं। किसी को एक शाइबा भी अगर कोई होता है, कोई मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी में या मेरी जुबान में या मेरी अदायगी से कहीं पे लगा हो कि ये जो मैं पॉइंट करवा रहा हूं ये डिमांड नहीं है, ये कुछ और है, तो मेरी इस्लाह जरूर करें यार, ताकि मुझे भी को पता लगे कि यार मैं सही नहीं पढ़ाता। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन प्रोविंसेस, सही है जी। तो लखनऊ पैक्ट में इन्होंने कहा कि गवर्नर विल बी अपॉइंटेड विद द कंसेंट ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, व्हाट ब्रिटिश अनाउंस्ड। उन्होंने कहा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो खत्म, अब होगी इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चलो कोई बात नहीं, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में भी तो मेजोरिटी इंडियंस की है, बट इन्होंने ये पावर नहीं दी इसको, बल्कि किया क्या कि गवर्नर विल बी अपॉइंटेड बाय क्राउन, बादशाह, मलका इंग्लिस्तान की वो अपॉइंट करेगी जी गवर्नर को, ताकि मामला ही खत्म हो, आइंदा के बाद कोई चैलेंज ही ना करे। क्राउन के याद रहे एक चीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप चैलेंज करें, आप क्रिटिसाइज करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप चैलेंज करें या क्रिटिसाइज करें, इस पर आप पर गवर्नमेंट के लेवल पर कोई सख्ती हो जाए, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कर सकते हैं, आपका व्यू है, बट अगर आप ब्रिटिश क्राउन को चैलेंज करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, इसका मतलब है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये ट्रीजन है जी, गद्दारी है। सो गवर्नर कौन अपॉइंट करेगा जी, 1919 में ब्रिटिश ने लिख दिया, क्राउन। तो अब क्राउन की अपॉइंटमेंट को अगर आप चैलेंज करेंगे तो गद्दारी के जुम्मन में आ जाएगा। इसी नैरेटिव पे याद रखें जहन में, चाहे आप आगे चल के कोई सरकारी मुलाजिम बन जाते हैं, आप पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, उसकी पॉलिसीज को आप अखबार में लिख के, सोशल मीडिया पे, बातचीत में, ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसको गवर्नमेंट्स रोकने की कोशिश करती हैं, सरकारी मुलाजिम यूं ना करें, लोग यूं ना करें, वो ना करें, लेकिन गवर्नमेंट्स इसको जितना रोकने की कोशिश करती हैं उतनी गवर्नमेंट्स अनपॉपुलर होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, अगर कोई स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, रियासत को, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियासत एंड गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा जी। गवर्नमेंट सिर्फ रियासत को चलाती है, आज को ये गवर्नमेंट है, कल कोई दूसरी है, परसों को तीसरी है, रियासत अपनी जगह मौजूद रहेगी। रियासत 1947 से मौजूद, रियासत 1947 से है, गवर्नमेंट्स आती गई जाती गई। सो अगर कोई रियासत को चैलेंज करे तो वो गद्दारी में आ जाएगा जी। समझ आ रही जी, ये ज़हन में रखिएगा। सो उन्होंने मामला ही खत्म कर दिया कि आइंदा के बाद कोई गवर्नर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज ही ना करे। बड़ा जबरदस्त ब्रिटिश ने काम किया। अगली चीज, अगली बड़ी मजेदार चीज, अगली चीज जो लखनऊ पैक्ट में उन्होंने डिमांड की वो थी कि एक ऑफिस होता था जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
फॉर इंडियन अफेयर्स, वजीर अमूर हिंद। अब ये जो वजीर अमूर हिंद है, ये लंदन में होता था। और इसका एक पूरा ऑफिस होता था जिसका नाम होता था इंडिया ऑफिस। सही है जी। अब ये जो इंडिया ऑफिस है, इसका तमाम खर्चा, इसके एक्सपेंसेस, ये इंडियन ट्रेजरी, इंडियन खजाना, उसके जिम्मे होता था इसका खर्चा उठाना। सो व्हाट दे डिमांडेड कि भाई हम इस डिपार्टमेंट का खर्चा इंडिया का ट्रेजरी अब नहीं उठाएगा। ये ब्रिटिश लंदन का दफ्तर है, ब्रिटिश जाने, उनका काम जाने, हम इसका खर्चा नहीं उठाएंगे। सो ब्रिटिश एक्सेप्टेड कि जी ठीक है, आइंदा के बाद इंडिया के खजाने से इंडिया ऑफिस जो कि लंदन में है उसका खर्चा नहीं कटेगा, बल्कि ब्रिटिश खुद इसका खर्चा देंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और पॉइंट भी था कि इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस में एक काउंसिल भी होती थी जिसका नाम होता था काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसमें तकरीबन को 15 के करीब मेंबर होते थे और वो सारे ब्रिटिश होते थे। तो उन्होंने ये भी डिमांड की कि ये काउंसिल खत्म करो, इस काउंसिल को खत्म करो और इसकी जगह पर नायब वजीर हिंद, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो लगाओ जो कि इंडियन होना चाहिए, ताकि इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहां पे बात करे। ये ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दी, यानी एक चीज मान ली, दूसरी चीज रिफ्यूज कर दी। लेकिन फिर भी चलो, दो बातें की उस ऑफिस से रिलेटेड, एक मान ली, एक नहीं मानी। अब हर चीज तो अंग्रेज ने नहीं ना माननी है आपकी, लेकिन पहले से तो चलो बेहतरी आ गई। लेकिन जो सबसे काम का पॉइंट है, लखनऊ पैक्ट में दे डिमांडेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी, ये डिमांड की। सही है जी। अब ये जो सूबाई खुद मुख्तारी डिमांड की, ये बड़ी मजेदार है। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन इंडिया, यानी ये उस वक्त इन्होंने डिमांड की जब इंडिया में सूबाई हुकूमतें ही नहीं थी।
सूबाई हुकूमतें होंगी तो तब वो खुद मुख्तार होगी ना, जब हुकूमतें नहीं होंगी तो खुद मुख्तारी कैसी? सो बेसिकली यानी डिमांड क्या थी कि पहले हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाओ। बेसिकली डिमांड ये बनती कि पहले हमारी बनवाओ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जो किसकी हो? इंडियंस की हुकूमतें बने सूबों में, और फिर वो हुकूमतें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी रखें, यानी कि हम इंडियंस को फिर उन हुकूमतों को चलाने के लिए खुद मुख्तारी भी हो। सो ये बेसिकली एक पॉइंट नहीं है कि सिर्फ खुद मुख्तारी मांग ली, पहले हुकूमतें बनवाओ और वो हुकूमतें फिर खुद मुख्तारी की भी हो। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी डेंजरस बिकॉज ईदर ब्रिटिश वुड एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। बीच का रास्ता तो नहीं निकलेगा ना जी, या खुद मुख्तारी होती है या खुद मुख्तारी नहीं होती। एक्सेप्ट करने की सूरत में 11 प्रोविंसेस मुकम्मल तौर पे ब्रिटिश के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इंडियंस की हुकूमतें बनेंगी, इंडिया का वजीर आला होगा सूबे का, इंडिया के वजीर मिनिस्टर होंगे, सूबा वो खुद चलाएंगे, अंग्रेजों का तो ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा नीचे सूबों के साथ। ये तो ब्रिटिश किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिजेक्ट करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग ये सड़कों पे आ जाएंगे इमरान खान की तरह, कि अगर मैं सड़कों पे आ गया तो मैं तो बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। हाँ जी, तो ब्रिटिश फंस गए कि भाई अब क्या करें। सो फिर मेरे जैसे एक अक्लमंद आदमी ने मशवरा दिया कि जनाब डायरकी इंट्रोड्यूस करो। डायरकी मींस डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसे? प्रीवियसली इंडिया का सूबा, अ प्रोविंस इन इंडिया, इसको रूल करता था गवर्नर, और गवर्नर होता ही ब्रिटिश था। इसके नीचे कोई वजीर मुशीर और इस तरह की चीजें कोई नहीं होती थी, असेंबली होती थी बस, लेकिन कोई वजीर आला या इंडियन मिनिस्टर्स और ये काम नहीं होता था। 1919 में फिर उन्होंने कहा ओके गवर्नर होगा, गवर्नर के नीचे फिर एक सीएम भी होगा, सीएम के नीचे मिनिस्टर्स भी होंगे, ये सारे इंडियंस होंगे। ठीक है जी, बट कुछ डिपार्टमेंट्स ये चलाएंगे, फ्यू डिपार्टमेंट्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पुलिस, इस तरह के डिपार्टमेंट्स चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर चलाएंगे। और कुछ डिपार्टमेंट जिस तरह गवर्नर पहले चला रहा था, ये गवर्नर वो वैसे ही चलाता रहे, जैसे फाइनेंस, जैसे रेवेन्यू, जैसे इरिगेशन एक्सेट्रा। यानी पैसे के और फाइनेंस के सारे जो मजबूत शोबे हैं वो गवर्नर के पास, नहरी निजाम गवर्नर के पास, ज़राअत मिनिस्टर के पास। तो कैसे चला लेगा नहरी निजाम के बगैर? सो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सब्जेक्ट इनको कह दिया उन्होंने ट्रांसफर्ड डिपार्टमेंट्स, ट्रांसफर्ड टू इंडियन मिनिस्टर्स एंड सीएम, और इनको कह दिया रिजर्व्ड डिपार्टमेंट्स।
रिजर्व्ड विद गवर्नर। सो हो गया डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि जी अभी इंडियंस इतने पहले वो ये इतने काबिल नहीं हुए हैं, अभी ये जरा सूबे में सूबाई हुकूमतें थोड़ी हल्की हल्की चला लें, देन लेटर ऑन हम इनको ऑटोनॉमी दे देंगे। सो एक बीच का रास्ता निकाल लिया, और इस मॉडल पर जो पहली गवर्नमेंट बनी वो 1920 में पंजाब में बनी, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बाकी सूबों में भी बनना शुरू। सो ब्रिटिश ने नो डाउट अपने लिए एक रास्ता तो निकाला, बट पहले की निस्बत बेहतरी तो आ गई, इंडिया में हुकूमतें बनना शुरू हो गई। सो बहुत बड़ा स्टेप था। नाउ मेक श्योर दैट वट एवर ब्रिटिश रिजेक्टेड और एक्सपेरिमेंटेड इन 1919, वो लेटर ऑन इन 1935 उन्हें देनी पड़ी। अगला एक्ट 1935 का आता है। सो ऐसा नहीं है कि इंडियन लीडरशिप ने जान छोड़ दी, बात खत्म कर दी, ये बात चलाते रहे। सो ये कुछ वैसे तो पूरा पूरा बंडल है, पूरा किताबचा है, लेकिन उसमें से कुछ मेजर पॉइंट्स वो हमने डिस्कस की कि कैसे जनाब इंडिया कैसे चेंज हुआ लखनऊ पैक्ट की सॉरी की वजह से। ठीक है जी। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो पहला समझने वाला। क्लियर हो गया जी। अब देखें कुछ डिमांड्स के साथ जाहिर है इनकी यूनिटी भी तो हुई थी ना आपस में। सो कुछ 2-3 पॉइंट्स तो इनकी यूनिटी के भी होने हैं ना जी। सही, तो जरा उनको भी देख लेते, छोटे छोटे पॉइंट्स। एक पॉइंट तो है 33% सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि इंडिया में जो भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी उसमें कम से कम 33% सीट्स जो है ना जी वो मुस्लिम्स को मिलेंगी। इसीलिए हम देखते हैं जो इन्होंने 150 की सीटों की डिवीजन बनाई थी, 120 इंडियन, 30 ऑफिशियल्स, उसमें से 40 मुस्लिम्स होंगे, 1/3 हो गए ना आउट ऑफ 120 का तीसरा हिस्सा। तो हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट भी हुआ कि ब्रिटिश ने जब जो अपनी दी असेंबली 145 की, उसमें उन्होंने कहा जी 103 इलेक्टेड इंडियंस, 42 ऑफिशियल्स, तो इन 103 में से उन्होंने 30 तो रखी ना मुस्लिम्स के लिए, तो चलो 33 के करीब करीब तो रखा उन्होंने, तब्दीली तो आई। इसी तरह जो उन्होंने 60 का हाउस रखा उसमें से 34 इंडियंस और उसमें से 11 मुस्लिम्स, तो ये भी ये ऑफिशियल्स, ये भी ऑफिशियल्स, ये पीछे मैंने भी बनाया। तो कम से कम मुसलमानों को तो इस पॉइंट का फायदा हुआ, इत्तेहाद के इस पॉइंट का। दूसरा पॉइंट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सेप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है, क्योंकि ऑफिशियली तो मुसलमानों को 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए आपको। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस माने ना माने क्या फर्क पड़ता, बट फर्क पड़ता है, बिकॉज ऑफिशियली 1905 में ईस्ट बंगाल भी तो आपको मिल गया था ना, फिर 1911 में कैंसिल भी हो गया। तो अगर कोई चीज ब्रिटिश ने दे दी है 1909 में, आगे चल के कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल अगर करेंगे तो किसके प्रेशर में करेंगे, कांग्रेस के प्रेशर में। और वही कांग्रेस जब एक्सेप्ट कर गई सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो मुसलमानों की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी कि चलो शुक्र है।
ये ऐसा ही है ना कि तुम में से कोई शख्स जो है वो सीएसएस कर ले, तो मैं कहूं है इसका कैसे सीएसएस हो गया, ये तो फजूल आदमी, इसको सवाल करना नहीं आता था, इसको तो कुछ अक्ल ही कौन थी, कॉमन सेंस ही कौन थी। मेरे पास पड़ा हुआ मुझे पता है, मैं जहां जहां बैठूं हर जगह पर आपके खिलाफ बोलता रहूं, वो इसको क्या पता है, इसको हर जगह बात फैलाऊं, उनको यार वो तो सर तो तेरे खिलाफ है, तो सर ने तो कहा तुझे तो कुछ पता ही नहीं था, तू तो पता नहीं कैसे पैसे दे के पास हो गया, तो आपकी तो बड़ी प्रेस्टीज खतरे में पड़ जाएगी। तो अगर मैं मान जाऊं कि नहीं नहीं बड़ा बेहतरीन यार पढ़ाई करके मेहनत करके पास की, तो उससे फर्क क्या पड़ना है, बस आपकी एक मॉरल विक्ट्री होनी कि चलो शुक्र है जान छुट्टी, ऐसी बात। लेकिन बहुत बड़ी विक्ट्री थी। वो जो फियर था कि कल को जी हमारा जिस तरह ईस्ट बंगाल खत्म हुआ, कल को सेपरेट इलेक्टोरेट भी ना खत्म हो जाए। सही है। समझ आ रही जी। फिर तीसरा पॉइंट था जी, तीसरा पॉइंट था जो कि माइनॉरिटी राइट्स से रिलेटेड था, जिसके लिए फिर जिना को भी कहते हैं ना कि जी जिना वॉज चैंपियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। वो ये था कि इफ 75% members of a community, कोई भी कम्युनिटी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, कोई भी, if 75% members of a community in an assembly, if 75% members of a community in an assembly object to a bill, then it will not get passed by assembly. अगर किसी असेंबली में किसी कम्युनिटी के 75% मेंबर, यानी किसी असेंबली में अगर लेट से 12 लोग हैं, तो 8 ने अगर ऑब्जेक्ट कर दिया, 8 बनेंगे, 75 कितना बनता है, ज्यादा होगा कि 8 ही होगा, नहीं 8 ही होगा, 8 बनेगा, कितना बनेगा, 9 बनेगा, 9 बनेगा, 9। अगर उन 12 मेंबर्स में से अगर लेट से 100 की असेंबली है, उसमें 12 मुस्लिम है सपोज, लेकिन 9 मुस्लिम्स रिजेक्ट कर दें किसी बिल को कि नहीं ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर भाई वो बिल पास नहीं होगा, चाहे सारे बाकी 91 लोग कहें कि हाँ हाँ पास होगा पास होगा, पास नहीं होगा। मतलब कि हर असेंबली में, सूबे में, सेंटर में, जहां भी माइनॉरिटीज को साथ लेके चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी राइट्स का पॉइंट था कि हम पूरे इंडिया में माइनॉरिटीज को साथ, जहां जिस सूबे में जिसकी माइनॉरिटी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट कि जी हम आपस में तय करेंगे। ये कभी भी इंडिया में अप्लाई नहीं हो सका, क्योंकि 1919 के फौरन बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दोबारा इख्तलाफात बनना शुरू हो गए। तो जो अंग्रेजों ने ऑफिशियली दे दिया वो तो एक्सेप्ट हो गया, जो इनकी आपस की डील थी वो कभी नहीं चल सकी इंडिया। समझ आ रही जी। और इसी माइनॉरिटीज के पॉइंट का फिर चौथा पॉइंट, वो भी माइनॉरिटी राइट्स पे ही है, दैट minorities will get more seats in comparison to their
पॉपुलेशन। अकलियतों को उनकी आबादी से ज्यादा सीटें दी जाएंगी, सेंटर में भी, प्रोविंसेस में। तभी तो मुसलमानों के लिए भी लिखा गया था ना कि जी 33% सीट्स जो है वो उनके लिए होंगी। एक सेकंड नोट कीजिएगा जी भाई। जी माजरत, जरा फोन आ गया था एक।
सो यूं जनाब, ये वो सारे पॉइंट्स के जिनसे कॉन्स्टिट्यूट होता है फिर आपका लखनऊ पैक्ट। और ये बहुत बड़ी जो है वो चेंज थी एज फार एज इंडियन पॉलिटिक्स इज कंसर्न। बट 1919 से इंडियन पॉलिटिक्स जो अभी तक बड़ी रैशनल थी, इसमें अगर एग्रेशन था भी तो ये एग्रेशन भी पॉलिटिकल था। रिलीजियस एलिमेंट ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से था ना कांग्रेस की तरफ से था टिल 1919। हाँ, नेशनलिज्म था। नेशनलिज्म का सहारा इंडियन नेशनल कांग्रेस लेती थी, लेकिन रिलीजियस फैक्टर नहीं था। रिलीजियस फैक्टर 1919 से आना शुरू हुआ और इसने इंडियन पॉलिटिक्स की नेचर ही फिर तब्दील करनी शुरू कर दी। उसको फिर कल देखेंगे हम। इशू को क्वेश्चन अगर किसी का क्यों जी? लखनऊ मुआहिदा, चपेड़ मारूं मैं। लखनऊ मुआहिदा या सीएसएस के पेपर देने, वहां भी लिखना लखनऊ मुआहिदा। गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था, गवर्नर। तो उन्हें गवर्नर जनरल से पावर लेके क्राउन को दे दी। सेम फंक्शन था पहले जैसा, जाहिर पहले जैसे चला रहे थे वैसे था। सर ये माइनॉरिटीज कौन सी असेंबली में? तमाम असेंबलीज में भाई, तमाम असेंबलीज में, जितनी भी असेंबलीज बनेंगी सब। सेनेट बनाने का मकसद ही यही था कि भाई प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी करनी। तो देखें बाय कैमरल लेजिस्लेचर हम इंडिया में ले आए हैं। हाँ, तो सेनेट में भी मेजोरिटी में थे, इसीलिए गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर भी रखी हुई थी कि अगर इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश के रूल्स एंड रेगुलेशन से जरा हट जाते हैं तो फिर गवर्नर जनरल वीटो कर देगा भाई। सिंपल। ये नहीं है कि सीटें दे देने से पावर नहीं आ जाती। सर पैक्ट मुआहदे को ही कहते हैं ना। हाँ, छोकरी ठीक कह रही हो तुम, लड़की को भी छोकरी कहते हैं। तो मैं तुम्हें आज से छोकरी कहूंगा, लड़की या गर्ल नहीं कहूंगा, ठीक है? तो सीएसएस का पेपर देना, उधर भी यही लिखोगे, मुआहिदा लखनऊ।
पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं सीएसएस करने। वो जो वहाँ पेपर, जो अंग्रेजी में पेपर देना, उसमें मुआहदा लिखोगे जाके, मुआहदा लखनऊ। हर क्लास में किसी एक ने ना कोई अपनी इज्जत अफजाई करानी जरूर होती है। हाँ, हो जो प्राउड मेरी लैंग्वेज का। हाँ, चलो एक और आ गया, डीले लखनऊ। भाग जो, कल मिलेंगे। जिन्हें इंसिस्टेड चेंज ऑब्जेक्टिव, दैट वाज ऑन 5 that was on 5 show, that was on। हाँ जी, लॉयल्टी का पॉइंट जिना कहता था जी चेंज करो, तो वो मुस्लिम लीग ने फिर चेंज भी किया, क्योंकि कांग्रेस समझती थी कि भाई हमें कोई लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश नहीं शो करनी। निदा मेरी तरफ से जवाब है तुम्हें, जा जवाब है मेरे लो। दे दिया जवाब। मैं शेयर कर दूं फिर मैं भूल लूंगा। एक तो वाहिद नु भी अग लगी होंगी, नाल ही मैसेज हर पासे कि चलो। किधर किया, जनवरी ग्रुप किया है पाकिस्तान, जूम पाकिस्तान पे जो भी शेयर करते हैं। हो गया शेयर। ओके जी, कल मिलते हैं, बाय बाय।